अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ डील करने के लिए बेताब है। इस्लामाबाद में बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाया कि ईरान इस वक्त ब्लैकमेलिंग कर रहा है, भत्ता वसूली कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। बावर कराया कि अमेरिका के चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बीजिंग भी सारी दुनिया की तरह इस बहरान का खात्मा चाहता है। Jared, they've all done a very good job, and I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. But we have a very good relationship with China. He would like to see this ended also. He certainly ended. Everyone, I want to see it ended too.